अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम की। वी नो एट इक्विलिब्रियम concentration of reactants and concentration of products becomes constant, and it appears as if the reaction has stopped. But this is not the case. When the equilibrium is reached in case of a reversible reaction, some reactant molecules change into products and same amount of product molecules change into reactants. That is, the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, and the concentration of reactants and products becomes constant. डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सपोज ये जो क्लासरूम है इसकी कैपेसिटी 20 स्टूडेंट्स की है। जब ये क्लासरूम फुल होगा तो इसमें 20 स्टूडेंट्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट डोर पर बैठा है तो वो किसी स्टूडेंट को पकड़ के पुल आउट करता है, यानी क्लासरूम से बाहर निकालता है और खुद उस स्टूडेंट को रिप्लेस करता है। इस तरीके से कमरे में स्टूडेंट्स बराबर 20 रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट चेंज होते रहेंगे। फिर दूसरा स्टूडेंट आएगा, किसी और स्टूडेंट को पकड़ के बाहर निकालेगा, वहाँ उसकी जगह पर आएगा। फिर तीसरा स्टूडेंट आएगा, किसी और स्टूडेंट को पकड़ के बाहर लेगा और वहाँ से और एक स्टूडेंट आएगा। इस तरीके से क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहेंगी, 20 रहेंगी, लेकिन स्टूडेंट्स चेंज होते रहेंगे। लास्ट टाइम पर हमने इवापोरेशन की एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इज रिवर्सिबल। दैट इज व्हेन water molecules evaporate, they get collected above the surface of the liquid, and after some time the concentration of water vapors and liquid water molecules becomes constant. ऐसा लगता है कि the process has stopped. At equilibrium, same number of water molecules change from liquid state to the vapor state, and the equal number of molecules change from vapor state into liquid state. In this way, the concentration of water vapors and the concentration of molecules of water in liquid state becomes constant. However, the process does not stop. यानी जितने वाटर मॉलिक्यूल्स इवापरेट होके वेपर फेज में चले जाते हैं, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक प्रोसेस, एक्सप्लेन इट, और एक्सप्लेन द डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको आपके लिए रीड आउट करता हूँ। When the equilibrium is reached, the concentration of reactants and products becomes constant. For example, consider the reaction. इस रिएक्शन को हम कंसिडर करेंगे, हाइड्रोजन गैस reacts with iodine gas to form hydrogen iodide. When this reaction proceeds, the color becomes constant after some time because the concentration of hydrogen gas, iodine gas and hydrogen iodide gas becomes constant. Thus, when the equilibrium is reached, it appears that the reaction has stopped. ऐसा लगता है कि reaction has stopped. But this is not the case. The reaction is still going on in the forward as well as in the backward direction. However, rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. At equilibrium, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Hence, the concentration of reactants and products becomes constant,
but the reaction is still going on. This is called dynamic nature of equilibrium. Hence, we may say that equilibrium is a dynamic process. It is not a static process.